सो डोंट वरी अबाउट द वीज़ा प्रोसेस। सो ये बेसिकली ईयर लॉन्ग होता है। फॉर सम कोर्सेज देर आर लाइक कंपल्सरी प्लेसमेंट ईयर। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा एंड स्पेशली फॉर बैचलर्स, क्योंकि So hello friends, welcome to London Dreams. So today in this video we will be talking about placement year and all around the questions regarding the same, that whether you should choose placement year or not during your bachelor's or even master's while applying for study in UK. So primarily हम ये discuss करेंगे कि placement year होता क्या है. So placement year is a year gap of work experience during your course tenure, जो कि मोस्टली सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के और यू कैन से द थर्ड ईयर के बीच में होता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मास्टर्स स्टूडेंट, उनका आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है, जब व्हेन दे कंप्लीट देयर 1 year ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ मास्टर्स 1 year का होता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ और कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स, they get a placement year. So that's the basic definition of placement year, and it occurs between second and the final year mostly for bachelors. So ये basically year long होता है. मे बी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मे बी ईयर एंड हाफ भी हो सकता है, बट फॉर द मोस्ट यूनिवर्सिटी दे प्रोवाइड अ ईयर लॉन्ग ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर सैंडविच ईयर और यू कैन से प्लेसमेंट ईयर. इसके बेनिफिट्स मैं पहले बता देता हूँ. ऑफ कोर्स प्लेसमेंट ईयर है, सो यू विल गेट द बेसिक एडवांटेज ऑफ अर्निंग मनी, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इशू होता है, जो भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, कि फाइनेंस का प्रॉब्लम. एंड स्पेशली फॉर द बैचलर्स लाइक मी, अगर आप बैचलर्स स्टूडेंट हो एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू पे योर ट्यूशन फीस फॉर फाइनल ईयर और मे बी सेकेंड ईयर, और यू आर इवन ट्राइंग टू जस्ट फुलफिल योर लिविंग एक्सपेंस इन लंडन पर्टिकुलरली, सो आपको ये प्लेसमेंट ईयर चूज करना चाहिए पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड यू विल बी एबल टू वर्क अंडर द बेसिक पे रेट ऑफ यूके फॉर अ ईयर, which is provided a good amount of salary by the company whichever you are like applying or whichever they are providing you sponsorship. You have the benefit of networking, you have the benefit of earning money, you have the benefit of maybe getting a sponsored job after completing your education, you can say bachelor's or master's. So eligibility basic अगर बताएं प्लेसमेंट ईयर का क्या होगा, सो यू हैव टू बी इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर अ फुल टाइम प्रोग्राम, एंड also they must be providing a placement year. So अगर आपको placement year चाहिए, you need to be prepared while you are applying for universities back in your home country. So आपको वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें प्लेसमेंट ईयर प्रोवाइड किया जाता है, एंड यू कैन जस्ट कंफर्म द यूनिवर्सिटी बाय आस्किंग देम थ्रू योर मेल और मे बी थ्रू द इंडिया ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी that whether this particular course which I am applying, do they provide a placement year or not. So if you have applied to a placement year course in your university and you are in the UK, you have completed your first year education, so the university will provide you an email or maybe inform you by some other method of media by telling you that now we are opening the application for placement year, whether you want to choose or not, it depends upon you. So हर बच्चे के पास एक इंडिपेंडेंट चॉइस होती है, ये नेसेसरी नहीं होता कि आपको प्लेसमेंट ईयर चूज करना है. इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट, एंड इफ़ यू डोंट वांट यू कैन कंप्लीट योर फाइनल ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकेंड ईयर. For some courses there are like compulsory placement year, but it depends upon course to course. कभी कभी यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा वाइल बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और मे बी मास्टर्स. सो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे और कोर्स पे. मोस्ट ऑफ द कोर्सेज और यूनिवर्सिटी पे ऐसा नहीं होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ ऑप्शनल वेदर यू वांट टू चूज और नॉट. So when the time comes for the placement year application, you need to choose particular field which you are interested or in which
you have been enrolled for your course like business management, so the placement year or your job should be, or your job role should be regarding the same field. It would be better for you, like marketing or sales representative or any post which you prefer and would love to work under certain company with a certain role for a year. Just show the university your interest by emailing them, or maybe connecting with the placement year, you can say team of the university, and showing your interest to them and saying that I would love to join the placement year by applying through the process which they have provided. And at the end, if your application is good, if you have shown a particular good amount of interest by providing certain answers of particular questions they ask you before application and during application, so you need to prepare for that. And if you have been successfully selected for the placement year, of course everyone does not get placement year. You need to apply that, and you need to go through all recruitment process of the placement year, and if you are successful, you will be able to crack and gain a 1 year of experience during your course tenure. सो ये मैं पूरा आपको बता दिया प्लेसमेंट ईयर क्या होता है, व्हाट्स द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट्स द बेसिक प्रोसेस टू अप्लाई इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर प्लेसमेंट ईयर. एंड मस्ट नोट पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर चूजिंग प्लेसमेंट ईयर और इफ़ यू वांट टू चूज़ अ प्लेसमेंट ईयर फॉर अ बैचलर्स और मास्टर्स, you need to choose the university if they are up like providing you the placement year or not. यहाँ पे क्या है, मास्टर्स के लिए ऑप्शंस कम है प्लेसमेंट ईयर के लिए, बट फॉर बैचलर्स देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी कोर्सेज यू आर अप्लाइंग. सो अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा कि वेदर यू शुड चूज़ और नॉट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको ये सारे बेनिफिट्स होंगे जो मैं पहले बता चुका और आगे बताऊँगा, बट there is a small disadvantage, I would say. If your graduation is completing, you can say 2024, now your graduation will be completing in 2025 just because you have chosen a placement year. So if you do not want to delay your graduation ceremony, or you can say graduation certificate, so please do not choose. But मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, एंड स्पेशली फॉर बैचलर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अर्ली स्टेज पे रहते हो एजुकेशन के, सो of course you at the end you will get a degree, but you need a certain amount of experience before entering your field, your market. So अगर आपको कोई issue नहीं है for extending your graduation, you should select प्लेसमेंट ईयर एंड गेट अ फील्ड एक्सपीरियंस. सो मैं वीज़ा का प्रोसेस अगर आपको बताऊं, ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर बैचलर्स, आपका वीज़ा 3 इयर्स के लिए इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी बैचलर्स 3 इयर्स का ही होता है, बट आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा when you have like completed your 1 year of experience. For example, अगर 2024 में आपका BRP expire हो रहा है, so if you have completed your second year and 1 year is left for your expiring of your BRP, so वो 1 year पूरा आपका जाएगा work experience में, or you can say placement year में. And after completing your placement year, you will be able to ask the university for a cash letter which they will issue you for 1 year, and for that 1 year you will be studying your final year education of your university or of your particular course, and at the end you will be graduating in 2025. So don't worry about the visa process. अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, and if they are confirming you that even if you are applying for placement year, क्योंकि यहाँ placement year mostly यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एप्लीकेशन होता है, so they try to help you with all the process, and they try to confirm you that after completing a placement year they will issue you a cash letter with no issues, and you will be able to complete your graduation after your placement year. सो ये पूरा प्लेसमेंट ईयर का सिनेरियो था जो मैं आपको बता दिया, जो मैं भी गो थ्रू कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इट्स डिपेंड अपॉन माई चॉइस वेदर आई विल बी चूजिंग और नॉट. इफ़ आई एम, आई विल लेट यू नो. सो ये पूरा प्रोसेस था, एंड हु सो एवर इज़ अप्लाइंग बैक इन इंडिया, if you want a placement year
for especially as I mentioned earlier, for bachelors जिनके लिए जिनको चाहिए placement year, please consider those universities, those public universities जो placement year provide करती हूँ, so that when you are in the UK they are giving you the option for the placement year. ऐसा ना हो कि आप यहाँ आए placement year के उम्मीद में and they don't have such type of program, I would say. So that's all for this video, and hope this video helps you in choosing your university in your criteria which as per your requirement. So if you have any issues, any doubts regarding study in UK or PSW, work visa, accommodation, please let me know. My Instagram is linked below in the description, and all my social media platforms. Please connect me over there, and hope to see you in next video. See you. Bye bye.